हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रिजॉइस एजुकेशन। हम 8th स्टैंडर्ड CBSE हिस्ट्री टेक्स्ट बुक के 10th चैप्टर पे है इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, अ न्यू एंड डिवाइडेड नेशन। When India became independent in August 1947, it placed a series of very great challenges. सीरीज ऑफ ग्रेट चैलेंजेस का मतलब है बहुत सारी दिक्कत, बहुत सारी परेशानियों से गुजरना पड़ा. As a result of partition, 8 million refugees had come into the country from what was now Pakistan. 8 million refugees country में आए थे जिसे अभी हम पाकिस्तान कहते हैं. These people had to be found homes and jobs. Then there was the problem of the princely states, almost 500 of them, each ruled by a Maharaja or a Nawab, each of whom had to be persuaded to join a new nation. हर एक को एक नया नेशन ज्वाइन करने की को कहा गया. The problems of the refugees and of the princely states had to be addressed immediately. और जो problems refugees और princely states के बीच में हो रहे थे उसे immediately address करना ज़रूरी था. In the longer term, the new nation had to adopt a political system that would best serve the hopes and expectations of its population. आगे का अगर सोचे तो नया नेशन को नया पॉलिटिकल सिस्टम अडाप्ट करना था जो लोगों को सर्व करे और उनके एक्सपेक्टेशंस को मीट करे. ओके स्टूडेंट्स, हम पेज नंबर 129 पे हैं. इंडियाज़ पॉपुलेशन इन 1947 वाज लार्ज, ऑलमोस्ट 345 मिलियन. इट वाज आल्सो डिवाइडेड. There were divisions between high caste and low caste, between the majority Hindu community and Indians who practiced other faiths. तो डिवीजन हुआ स्टूडेंट्स, डिवीजन था हाई कास्ट लो कास्ट के बीच, हिंदू और इंडियंस जो अलग कम्युनिटी को फॉलो करते हैं. The citizens of the vast land spoke many different languages, wore many different kinds of dress, ate different kinds of food and practiced different professions. How could they be made to live together in one nation state? हर एक को अलग अलग चीज़ों की रिक्वायरमेंट थी, तो हर कोई एक साथ इस देश में कैसे रह सकता था. टू द प्रॉब्लम ऑफ यूनिटी वॉज एडेड द प्रॉब्लम ऑफ डेवलपमेंट. एट इंडिपेंडेंस द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस लिव्ड इन द विलेजेस. फार्मर्स एंड पेजेंट्स डिपेंडेड ऑन द मानसून फॉर देयर सर्वाइवल. वो बारिश के का वेट करते थे सर्वाइवल के लिए ताकि उनको क्रॉप्स वो उगा सके और एग्रीकल्चर कर सके. So did the non-farming sector of the rural economy, for if the crops failed, barbers, carpenters, weavers and other service groups would not get paid for their service either. In the cities, factory workers lived in crowded slums with little access to education or health care. Okay? सिटीज़ में फैक्ट्री वर्कर्स कहाँ रहते थे? स्लम्स में, चौल में रहते थे और उनको एक्सेस नहीं था एजुकेशन या हेल्थ केयर का. Clearly, the new nation had to lift its masses out of poverty by increasing the productivity of agriculture and by promoting new job-creating industries. Unity and development had to go hand in hand. If the division between different sectors of India were not healed, they could result in violent and costly conflicts, high caste fighting with low caste, Hindus with Muslims and so on. Unity, एकांता और डेवलपमेंट, ग्रोथ, ये एक साथ जाते हैं. और अगर ये डिवीज़न डिफरेंट सेक्टर्स के बीच अगर होता या उसको हील नहीं किया जाता या उसे ठीक नहीं किया जाता तो वायलेंस होता, राइट. और उस पर क्या क्या होता? हाई कास्ट वर्सेस लो कास्ट, हिंदू वर्सेस मुस्लिम, ये झगड़े चलते. At the same time, if the fruits of economic development did not reach the broad masses of the population, it could create fresh divisions, for example, between the rich and the poor, between cities and the countryside, between regions of India that were prosperous and regions that lagged behind. So अगर ये जो economic development है वो लोगों तक सही तरीके से अगर नहीं पहुंचा गया तो ये सारे problems हो सकते हैं. A constitution is written. Between December 1946 to November 1949, some 300 Indians had a series of meetings for the country's political future. The meeting of the Constituent Assembly were held in New Delhi, but the participants came from all over India. Participants पूरे इंडिया से आए थे and from different political parties. These discussions resulted in the framing of the Indian Constitution, which came into effect on 26 January 1950. One feather of the Constitution was its adoption of universal adult franchise. All Indians above the age of 21 would be allowed to vote in state and national elections. 21 एज के ऊपर वोटिंग अलाउड थी स्टेट और नेशनल इलेक्शंस के लिए. दिस वॉज अ रेवोल्यूशनरी स्टेप. ये एक क्रांतिकारी स्टेप था. फॉर नेवर बिफोर हैड इंडियंस बीन अलाउड टू चूज देयर ओन लीडर्स. इन अदर कंट्रीज सच एज द यूनाइटेड किंगडम्स एंड. ओके स्टूडेंट्स, हम पेज नंबर 130 पे हैं.
द यूनाइटेड स्टेट्स द राइट हैज़ बीन ग्रांटेड इन स्टेजेस, और ये जो राइट्स थे, लोगों के राइट्स थे, उसे स्टेजेस यानी धीरे धीरे ग्रांट किया गया, अप्रूव किया गया. फर्स्ट ओनली मैन ऑफ प्रॉपर्टी हैड द वोट, जिनके पास प्रॉपर्टी है उनको वोट करना है, ऐसा पहले था. देन मैन हु वर एजुकेटेड वर एडेड ऑन. वर्किंग क्लास मैन गॉट द वोट ओनली आफ्टर अ लॉन्ग स्ट्रगल. फाइनली आफ्टर बिटर स्ट्रगल ऑफ देयर ओन, अमेरिकन एंड ब्रिटिश वुमेन वर ग्रांटेड टू वोट. फिर बाद में अमेरिकन और ब्रिटिश वुमेन को भी वोट करने के लिए ग्रांट किया गया. ये यूएस और यूके की बात हो रही है. ऑन द अदर हैंड, सून आफ्टर इंडिपेंडेंस, इंडिया चूज द to grant the right to all citizens regardless of gender, class, or education. A second feature of the Constitution was that it guaranteed equality before the law to all the citizens. Equality यानी समानता, regardless of their caste or religion affiliation. कुछ भी caste हो, कोई भी religion हो, equality मिलना ज़रूरी है. There were some Indians who wished that the political system of the new nation be based on Hindu ideas and that India itself be run as a Hindu state. कुछ political system का मानना था कि हिंदुत्व जगना चाहिए लोगों में और हिंदू के आइडियाज़ लेके हिंदू का स्टेट बनाना चाहिए. They pointed to the example of Pakistan, a country created explicitly to protect and further the interest of a particular religious community, the Muslims. However, the Indian Prime Minister Jawaharlal Nehru was of the opinion that India could not and must not become a Hindu Pakistan. India Hindu Pakistan बनना नहीं चाहिए. Besides Muslims, India has a large population of Sikhs and Christians, as well as many Parsis and Jains. Under the new constitution, they would have the same rights as Hindus, the same opportunities when it comes to seeking jobs in government or in the private sector. The same rights before the law. सबके rights यानी समांतर मिलने चाहिए. A third feature of the constitution was that it offered special privileges for the poorest and most disadvantaged. Third feature constitution का था, वो क्या करता था, ऑफर करते थे special privilege यानी special सुविधाएं गरीब लोगों के लिए और जो disadvantaged Indians हैं जिन्हें ये सुविधा नहीं मिलती है उनके लिए. Okay students, we are on page number 131. The practice of untouchability, described as a slur and a blot on the fair name of India, was abolished. Untouchability यानी अछूत, किसी को भी ऊंची जात वाले नीची जात वालों को नहीं छुएंगे, तो ये से भी abolish यानी खारिज किया गया. Hindu temples previously open to only the higher caste were thrown open to all, including the former untouchable. सबके लिए Hindu temples open किए गए. After a long debate, the Constitution Assembly also recommended that a certain percentage of seats in legislature as well as jobs in government can be reserved for members of the lowest class. बहुत बड़ी डिबेट के बाद कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने रेकमेंड किया कि कुछ थोड़े बहुत सीट्स हैं वो लेजिस्लेचर्स में देने चाहिए, गवर्नमेंट जॉब्स मिलनी चाहिए और रिजर्व होने चाहिए मेंबर्स को लोअर कास्ट वाले. It had been argued by some that untouchable, or as they were now known, Harijan candidates did not have good enough grades to get into the prestigious Indian administrative service. ठीक है, तो हरिजन कहा गया कि कैंडिडेट्स के पास ग्रेड्स नहीं अच्छे ताकि वो इतने बड़े इंस्टीट्यूट जैसे इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस में जा सके. But as one member of the Constituent Assembly, H.J. Khandekar, argued, it was the upper caste who were responsible for the Harijans being unfit today. Addressing his more privileged colleagues, Khandekar said, ठीक है, जे खांडेकर ने कहा कि अपर कास्ट लोगों को ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है और वही लोग जिम्मेदार है हरिजन्स को मानने के लिए कि वो अनफिट है, वो ये काम नहीं कर सकते. खांडेकर कहते हैं, वी वर सप्रेस्ड फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स. सप्रेस यानी कि हम दबे गए ब्रिटिशर्स से हज़ारों साल. You engaged us in your service to serve your own ends and suppressed us to such an extent that neither our minds nor our bodies and nor even our hearts work, nor are we able to march forward. और अभी क्या हो रहा है कि आपने हमें इतना दबा दिया है आपके सर्विस के तले कि हम सप्रेस यानी दब चुके हैं और इस तरह दब चुके हैं कि हमारा दिमाग, हमारी बॉडी और हमारा दिल काम नहीं कर रहा है और हम आगे भी नहीं बढ़ पा रहे हैं. Along with the former untouchables, the Adivasis or scheduled tribes were also granted reservation in seats and jobs. तो आदिवासीज को और scheduled tribes को भी reservation मिला seats and jobs के लिए. Like the scheduled caste, these Indians too had been deprived and discriminated against. The tribals had been deprived of modern health care and education, while their lands and forests had been taken away by more powerful outsiders. बाहर वाले लोगों ने उनके लैंड और फॉरेस्ट ले चुके थे. The new privileges granted them by the Constitution were meant to make amends for this.
The Constituent Assembly spent many days discussing the power of the central government versus those of the state government. Constituent Assembly बहुत दिन बिताए पावर डिस्कस करने के लिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर क्या है और स्टेट गवर्नमेंट की पावर्स क्या रहेंगे. Some members thought that the center's interest should be foremost. सेंटर का जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो इंटरेस्ट है वो सबसे ऊंचा होना चाहिए. Only a strong center, it was argued, would be in a position to think and plan for the well-being of the country as a whole. एक strong center ही एक ऐसे position पे होगा जो सोच सके और plan कर सके, पूरे देश का भला कर सके. Other members felt that the provinces should be greater autonomy and freedom. बाकी members को लगा कि जो provinces हैं वो autonomy और freedom के basis पे होने चाहिए. A member from Mysore feared that under the present system, democracy is centered in Delhi and it is now allowed to work in the same sense and spirit in the rest of the country. मैसूर डरने लग गए थे, मेंबर फ्रॉम मैसूर डरने लग गए थे कि उनके प्रेजेंट सिस्टम में डेमोक्रेसी दिल्ली में बेस्ड है और वो अलाउ नहीं करती सेम सेंस एंड स्पिरिट से बाकी की कंट्री के लिए. अ मेंबर फ्रॉम मद्रास इंसिस्टेड दैट the initial responsibility for the well-being of the people of the provinces should rest with the provincial governments. Initial responsibility लोगों का अच्छाई की और ये provinces provincial government के पास होनी चाहिए. The constitution sought to balance these competing claims by providing three lists of subjects: a union list with subjects such as taxes, defense and foreign affairs, which would be the exclusive responsibility of the center. तो ये responsibility होगी center की. A state list of subjects such as education and health, which would be taken care of principally by the states. So एक state list निकाली गई education और health की जो take care करेंगे state. A concurrent list under which would come subjects such as forest and agriculture, in which the center and the state would have joint responsibility. Concurrent list में forest और agriculture आएगा students और उसमें responsibility होगी center और state की jointly यानी एक साथ. Another major debate in the Constituent Assembly concerned language. और एक debate यानी विवाद होता था Constituent Assembly में language भाषा के प्रति. Many members believe that the English language should leave India with the British rulers. Its place, they argued, should be taken by Hindi. However, those who do not speak Hindi were of a different opinion. जो हिंदी बात नहीं करते उनका opinion अलग था. Speaking in the assembly, T.T. Krishnamachari conveyed a warning on behalf of people of the South, some of whom threatened to separate from India if Hindi was imposed on them. ठीक है, कुछ साउथ इंडियंस थे जिन्होंने अपोज किया और उन्होंने थ्रेटन किया, धमकी दी कि हम इंडिया से सेपरेट हो जाएंगे अगर हिंदी को राष्ट्रभाषा माना गया तो. A compromise was finally arrived at, namely that while Hindi would be the official language of India, English would be used in the courts, the services and the communications between one state and another. हिंदी राष्ट्रभाषा होगी लेकिन इंग्लिश जो है वो यूज़ की जाएगी बाकी कामों के लिए. Many Indians contributed to the framing of the constitution, but perhaps the most important role was played by Dr. B.R. Ambedkar, who was the chairperson of the drafting committee. वो chairperson थे drafting committee के, and under whose supervision the document was finalized. In his final speech to the Constituent Assembly, Dr. Ambedkar pointed out that the political democracy had to be accompanied by economic and social democracy. उन्होंने कहा कि political democracy जो है वो साथ साथ चलनी चाहिए economic और social democracy के. Giving the right to vote would not automatically lead to the removal of the other inequalities such as between the rich and poor or between the upper and lower caste. With the new constituent, he said, उन्होंने कहा कि सिर्फ वोट देने से या राइट टू वोट देने से कुछ ठीक नहीं होगा और ये जो भेदभाव चलते आ रहा है रिच और पुअर का या अपर और लोअर कास्ट का वो कम नहीं होने वाला. उन्होंने कहा going to enter into a life of contradictions. In politics, we will have equality, and in social and economic life, we will have inequality. Politics में हम भले equality देखते हैं, लेकिन social और economic life में हम inequality face करेंगे, यानी असमानता. In politics, we will be recognizing the principle of one man, one vote, and one value. हम recognize करेंगे principle का एक इंसान को एक vote and one value. In our social and economic life, we shall, by reason of our social and economic structure, continue to deny the principle of one man, one value. How were states to be formed? States कैसे form होने थे? Back in the 1920s, the Indian National Congress, the main party of the freedom struggle, had promised that once the country won independence, each major linguistic group would have its own province. हर एक इंसान जो एक भाषा बोलता है उनका ग्रुप बनाया जाए और उनका खुद का प्रोविंस यानी खुद का एक
स्टेट बनाया जाए. हाउएवर आफ्टर इंडिपेंडेंस द कांग्रेस डिड नॉट टेक एनी स्टेप्स टू ऑनर दिस प्रॉमिस. इंडिपेंडेंस के बाद कांग्रेस ने कोई स्टेप नहीं लिया इस प्रॉमिस को पूरा करने का. For India had been divided on the basis of religion, despite the wishes and effort of Mahatma Gandhi, freedom had come not only to one nation but to two. उनके हिसाब से freedom दो nations को मिला है. As a result of the partition of India, more than a million people had been killed in riots between Hindu and Muslim. जब मिलियन से भी ज़्यादा लोग मारे गए हिंदू मुस्लिम राइट यानी दंगे में. Could the country afford further division on the basis of language? अगर हिंदू मुस्लिम के ही इसमें इतने सारे लोग मारे गए तो कंट्री का डिवीजन लैंग्वेज के बेसिस पे होना सही है या नहीं. बोथ Prime Minister Nehru and Deputy Prime Minister Vallabhbhai Patel were against the creation of linguistic states. वो इसके खिलाफ थे. कौन? मिनिस्टर वल्लभ भाई पटेल और प्राइम मिनिस्टर नेहरू. After the partition, Nehru said disruptionist tendencies had come to the fore. To check them, the nation had to be strong and united. ठीक है, ये ऐसी परेशानी हमको आ पड़ी है और इसके लिए हमें यूनाइटेड यानी एक साथ खड़े रहना होगा. As Patel put it, the first and the last need of India at the present moment is that it should be made a nation. सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ इंडिया के लिए ये है कि इंडिया को क्या बनाया जाए, एक नेशन बनाया जाए. Everything will help the growth of nationalism has to go forward and everything which throws obstacles in its way has to be rejected. कोई दिक्कत या परेशानी अगर हमें इसके बीच आती है तो हमें उसे छोड़ देना चाहिए. We have applied this test to linguistic provinces also and by this test in our opinion they cannot be supported. हमने कोशिश करने की पूरी ये की लेकिन वो नहीं पूरी हो रही थी. That the Congress leaders would now go back on their promise created great disappointment. कांग्रेस लीडर्स ने प्रॉमिस किया था इंडिपेंडेंस के बाद लेकिन वो पूरा नहीं कर पाए. The Kannada speakers, Malayalam speakers, the Marathi speakers had all looked forward to having their own state. हर किसी को अपना खुद का स्टेट चाहिए था. The strongest protesters, however, came from the Telugu-speaking district of what was the Madras Presidency. When Nehru went to campaign there during the general elections of 1952, he was met with a black flags and slogans demanding "We want Andhra." ठीक है, जब वो इलेक्शन लड़ने गए 1952 में तब उन्हें लोग देखे उन्होंने जो ब्लैक फ्लैग लेके खड़े थे और उनके पास स्लोगन था "वी वांट आंध्रा." In October of that year, a veteran Gandhian named Potti Siramalu went on a hunger strike demanding the formation of Andhra state to protect the interest of Telugu speakers. वो हंगर स्ट्राइक भुखमारी पे चले गए और डिमांड कर रहे थे आंध्रा स्टेट के फॉर्मेशन का टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ तेलुगु स्पीकर्स. As the fast went on, it attracted much support. जैसे वो फास्ट आगे बढ़ा और बहुत सारे लोग उनके साथ जुड़े और हड़ताल्स एंड बंड्स वर ऑब्जर्व्ड इन मेनी टाउन और बहुत सारे टाउन्स में हड़ताल भी ऑब्जर्व हुई.